बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। इसमें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और अदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चैप्टर की रिवीजन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे। Let's start with the MCQs of the exercise. The first MCQs is Miss Aisha was busy in dissecting and analyzing the heart of frog. Probably she is cell biologist, taxonomist, histologist or paleontologist. जब dissection of heart की बात हो रही है, इसका मतलब है heart is made up of tissue. So Miss Aisha is a histologist. तो histologist वो बंदा होता है जो tissues की study करता है. MCQs number 2. How many people get lungs cancer by smoking? This question can be answered through biometry, बायोफिजिक्स, बायोइकोनॉमिक्स एंड पेलेंटोलॉजी। लंग्स कैंसर से कितने लोग मुतासर होते हैं? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सी फील्ड देगी? तो इसका आंसर देगी बायोमेट्री, क्योंकि ये नाम पे नंबर से डील कर रहा है। हाउ मेनी पीपल्स आर इन्फेक्टेड, यहाँ पे कुछ जगह पे एक बायोइकोनॉमिक्स को आंसर किया हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये होता है कि उसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ पीपल्स को डील कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बायोमेट्री डिस्कस करेगी। अल कानून फी तिब इज द फेमस बुक ऑफ। कानून फी तिब किसने लिखी? तो इस जो ये फेमस बुक है वो अली सीना की है। One of the following contains large number of cells but not a multicellular. इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल की तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मल्टीसेलुलर नहीं है? फ्रॉग, वॉलवॉक्स, मशरूम और क्लेमिडोमोनास। सो बेस्ट आंसर इज द वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स में जो सेल्स होते हैं वो कॉलोनियल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है वॉलवॉक्स, दैट इज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। According to five kingdom system of classification, mushroom belongs to five kingdom। जो रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी, उसके मुताबिक फंजाई कौन सी किंगडम का हिस्सा है? सॉरी, मशरूम कौन सी किंगडम का है? तो मशरूम इज द किंगडम फंजाई। The level of organization which is represented by the heart of frog. Heart of frog कौन से लेवल को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गन लेवल को, टिश्यू लेवल को, ऑर्गेनिज्म लेवल को या ऑर्गेनेल लेवल को? सो हार्ट ऑफ फ्रॉग इज an organ level. One of the following is not a macromolecule। इनमें से कौन सा मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है? ग्लूकोज, सक्रोज, फैटी एसिड्स और प्रोटीन। तो बेस्ट आंसर होगा ग्लूकोज इज नॉट ए मैक्रोमोलेक्यूल, इट इज ए मोनोसैकेराइड, इट इज a micromolecule. The number of plants in deserts are scarce. This could be the statement of paleontologist, social biologist, बायोजियोग्राफिक और द टेक्सोनोमिस्ट। डेजर्ट्स में, सहरा में जो पौधों की तादाद होती है वो बहुत कम होती है। तो इसको कौन डील कर रहा है? इसको बायोजियोग्राफिक डील कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक एरिया। Which bioelement makes most of the compositions of organisms body? तो बायोएलिमेंट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन से एलिमेंट की है? हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन। सो द बेस्ट आंसर इज द ऑक्सीजन, 65%। Which of the following cellular organization represents वॉलवॉक्स? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉलवॉक्स कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज में पूछे गए हैं और इनके बेस्ट आंसर आपको बता दिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, जो हमारे कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे और पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं और जनरल नॉलेज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज जनरली मुख्तलिफ टेस्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं। बायोलॉजी इज ए वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो बायोलॉजी इज द वर्ड ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। एज ए बायो एलिमेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, बायो एलिमेंट में कार्बन की कितनी परसेंटेज है? इट इज 18%। Considering elements of nature, the elements that make 99% of the total mass present does not include। अब जो 99% उनमें कौन से एलिमेंट नहीं है? तो इनमें मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम इज नॉट द 99%, ये 1% वालों में आता है, क्योंकि जो 99% बना रहे हैं वो 6 बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं।
The changes in the population occurs due to change in population में किस वजह से तब्दीली आती है? पॉपुलेशन में तब्दीली आती है एबियोटिक फैक्टर्स में तब्दीली की वजह से। तो एबियोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द एबियोटिक फैक्टर। तो उनकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज आती है। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज क्लासिफाइड एज, तो बहुत मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द zoology. In the word biology, the meaning logos is, biology में चूंकि दो अल्फाज हैं बायो और लॉजी, तो logos का क्या मतलब होगा? logos का मतलब होता है रीजनिंग एंड थॉट, रीजनिंग एंड थॉट दोनों। The part of a mustard plant which is used as a vegetable is classified as, तो इसमें हम प्लांट बॉडी को एज ए वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन, एब्जॉर्प्टिव मोड वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी खुराक लेता है, एंजाइम को सेल से बाहर सेक्रीट करते हैं और फिर उन जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली फाउंड इन द फंजाई। द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल इंक्लूड्स, बायोमॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं? मेनली इसकी दो टाइप्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये फिजियोलॉजी होगी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो फंक्शंस ऑफ द बॉडी को डिस्कस करती है, दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। द बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूड, सेल की बुनियादी तौर पर कितनी टाइप्स हैं? बुनियादी तौर पर सेल की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और द यूकैरियोटिक सेल्स। The branch of biology which deals with the study of social behavior of animal is classified as, very simple, to the social biology. The relationship of biology to other sciences in which organisms are studied from economic point of view is called, जब किसी भी organism को हम माशी लिहाज से देखेंगे तो उसको हम bioeconomic कहेंगे। The scientific knowledge is divided into various ब्रांचेस, साइंटिफिक नॉलेज को हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, जिस तरह बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स से ब्रांच है और मैथमेटिक्स है। तो इसलिए हम नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज को अपनी आसानी के लिए ब्रांचेस में डिवाइड किया। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो वो ब्रांच बायोलॉजी जिसमें हम स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। The seeds of the mustard plants are used in making, mustard plant के seeds का इस्तेमाल किसके लिए है? तो mainly these are used for the mustard oil. Studying organisms with an economic aspect is done in the bioeconomics. Study of inheritance is done in, inheritance mean कि वो character जो parents से offspring में, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होता है उसको हम inheritance कहते हैं। तो mainly इसको हम genetics में डिस्कस करते हैं। The characteristics which are regarded as characteristics of life are all same. तो लाइफ से रिलेटेड तमाम characteristics क्या होते हैं? सेम होते हैं। Different organelles assemble to form, जब बहुत से organelles मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएंगे। The type of cellular organization in which many organisms do not undergo cellular division is called, जिसमें जो है ना वो division of labor नहीं होती तो हम colonial organization कहते हैं। Forest community is what type of community? Complex community. The branch of biology which is the study of internal structure is called anatomy. The major groups in which organisms are divided does not include, अब इसमें सारे के सारे हैं लेकिन एक नहीं है, तो इसमें यूकैरियोट्स में हम ग्रुप्स को क्लासिफाई नहीं करते क्योंकि यूकैरियोट एक सेल है, यूकैरियोट एक सेल है, ये बाकी सारी किंगडम है, प्रोटिस्ट भी किंगडम है, प्रोकैरियोट भी किंगडम है, एनिमल भी। यूकैरियोट कोई स्पेसिफिक किंगडम नहीं है, ये सेल होते हैं जिसमें 4 किंगडम प्लेस की गई हैं। स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड टू प्लांट बाय टिश्यू नोन एज, कौन से टिश्यू प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? तो उसमें पेरेन्काइमा एंड कोलोनकाइमा आर रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेंथ। द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब चूंकि फोटोसिंथेसिस में मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है। द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट ऑर्बिट्स इन एनर्जी लेवल्स आर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? वो अपने आप को रिमूव करते हैं, सॉरी रिवॉल्व करते हैं,
तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो ऑर्बिट में होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। Which characters differentiate living things from non-living things? कौन से characters living things और non-living things को differentiate करते हैं इनमें से? तो they are living things are highly organized and complex, made of one or more cells and contain genetic material. तो ये living cells की क्या है definitions है? The study of fossils is called paleontology. Study of fossils is called paleontology. The experiments on DNA molecule and chromosome for knowing the basis of inherited diseases are conducted by molecular biologist. ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डीएनए क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम पोर्क वाज फॉर्म बाय विच टेक्निक? जब हम पोर्क से सिंथेटिक इंसुलिन बनाएंगे तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स, ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हाईली कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एटॉमिक पार्टिकल एलिमेंट लेवल और ऑर्गेनरी लेवल अप द बायोस्फीयर तक जाता है। The arrangement of which speaks of divisions of labor within the cell. Organelle speaks the division of labor क्योंकि हर organelle एक specific function perform करती है। Communities are which collection of organism? Community are the collection of dynamic collection of the organism. Communities are the dynamic collection. Best answer is the dynamic. The number of species of organisms currently known to science is, तो अब तक जो साइंस में नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? तकरीबन 25 लाख तक है। ऑप्शन नंबर सी 2.5 मिलियन। The study of principles from physics that are applicable to the biological phenomena is called simple biophysics. Stomach is an example of organ level. The famous book Al-Nabatat was written by Jabir bin Hayyan. Starch, protein, and lipids are known as the types of, these are the types of the macromolecules. The branch of biology which deals with the study of drugs and effects on the human body system is classified as the pharmacology. Oxygen accounts for how much percentage of total human body? It is 65%. सबसे ज़्यादा जो amount है वो oxygen की है. In the human body, 99% of total mass is formed by the how much elements? 6 bioelements form thus 99%. The atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. This stable form is called a molecule. Which one is a micromolecule? इनमें से कौन सा micromolecule है? ATP is a micromolecule. बाकी सारे क्या है? Macromolecule है. A structure formed by groups of similar cells organized into loose sheets or bundles performing similar function is called a tissue. जब similar cells आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? Tissues बनते हैं. Biological sciences have a set methodology and is based on एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। तो जब भी बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे या बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे या साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी मस्ट बी देयर। ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड न्यू एंड द बेटर वैरायटीज ऑफ फूड आइटम्स बाय यूजिंग व्हिच टेक्निक? ब्रीडर्स ने कौन सी टेक्निक यूज करके न्यू वैरायटीज बनाई हैं? तो मेनली दे यूज द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स में यूज विच टेक्निक टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? तो एस्ट्रोनॉट्स मेनली हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, इसमें वाटर में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और प्लांट्स को ग्रो करते हैं। बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। The art of horticulture is deal with the art of gardening. The elements which take part in making the body mass are called bioelements. The atom present in elements are of single kind. जो elements में होते हैं वो एक ही किस्म के atom होते हैं. Which treatment is instituted in a cancer patient? तो रेडियोथेरेपी is instituted. पहले हम कीमोथेरेपी यूज करते थे, आजकल रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। रेडिएशन से, रेडियोथेरेपी मीन रेडिएशन थेरेपी। Which statement is incorrect for cloning? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्लोनिंग के लिए बेस्ट नहीं है?
तो इट इन्वॉल्व मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्लोनिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ग्रुप of living organism of the same species living in the same place at the same time is called population। जब एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म एक ही एरिया में रहेंगे उसे पॉपुलेशन कहते हैं। Different species of plants and animals living in the same habitat is called community। A large regional community primarily determined by climate is called biome। The concept that various organisms dominated this planet during a various geological time period and thus placing organisms in time sequence came from the study by पेलेंटोलॉजिस्ट। तो पेलेंटोलॉजिस्ट ने ये बताया कि मुख्तलिफ एरा में यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म रह रहे थे। An unbroken series of species arranged in ancestors to descendant sequence with each latter species having evolved from one that immediately preceded it is called phyletic lineage। The technique of production of animal is known as breeding। Out of 92 naturally occurring chemical elements, how many are considered the bioelements? 16 are the bioelements। The tissues that help in the contraction of stomach walls to grind food are classified as muscular tissues। The location of meristematic tissue is on the tip of roots and shoots। meristematic tissue क्योंकि growth के लिए help करते हैं तो ये roots and shoots की tips पर होते हैं। Tissues which act as a contracting tissue are known as muscular tissues। The macromolecules are the ones that have high molecular weight। The animals either unicellular or multicellular. If they have distinct nucleus are called as eukaryotes। Organisms having limited number and types of organelles are known as prokaryotes। जिसमें organelles limited हों और उनको क्या कहते हैं? prokaryotes। In word atom, tom stands for cut। tom का मतलब है cut। atom mean not cut। The study of diagnosis and treatment of disease is done in the medicine and surgery। ये बहुत important profession है biology का। The scientific name of mustard plant is Brassica campestris। सरसों के पौधे का साइंसी नाम Brassica campestris है। The example of micromolecule include, इसमें कौन से micromolecules हैं? Water and glucose। Organisms are mortal। mortal mean कि organisms हमेशा के लिए नहीं होते, organism को मौत आती है। The study of all the biological processes by using mathematical tools and techniques is called, जब मैथमेटिक्स को यूज करेंगे बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, it is called the biomathematics and biometry। The structure of Golgi bodies and ribosomes are studied in electron microscope and staining techniques। The famous writing of Abdul Malik Asmi include, all of the above are the books of the Abdul Malik Asmi: Khalqul Insan, Al-Khayl, Al-Ibl। The book which is known as the Canon of Medicine in West is Al-Qanun fi Tib, Ibn Sina ने लिखी। Bioelements share their atoms to make molecules of life and biomolecules। The time of the year when mustard plants produce seeds is, mustard plant कब seed produce करते हैं? तो end of the winter में। The scientist Jabir bin Hayyan was born in 721 AD। The scientific name of the frog is, frog का साइंसी नाम है Rana tigrina। Horticulture is the study of the art of the gardening। Horticulture को हम gardening की स्टडी के लिए गार्डनिंग के मतलब को क्या कहते हैं? Horticulture, फनी बागबानी। Two different biomolecules combine to form, तो बायोमोलिक्यूल मिलेंगे तो क्या होगा? conjugated molecules बनेंगे। Gastric juice was is secreted by epithelial tissues of the stomach। The example of multicellular organisms are, कौन से multicellular हैं? Frog and mustard। The branch of biology which deal with the study of plants is called, plants की स्टडी को हम botany कहते हैं। The first Muslim scientist who studied in animal in detail, सबसे पहला कौन सा साइंसदान था जिन्होंने जानवरों को तफसील से पढ़ा? तो it was Jabir bin Hayyan। The branch of biology that is called the paleontology which deals with the study of, the paleontology deals with the study of fossils। The agriculture branch which is concerned with the breeding
and the care of domestic animal is classified as the animal husbandry. The famous work of Jabir bin Hayyan includes, तो जबर बिन hayyan का सबसे जो मशहूर वर्क है वो experimental investigation in chemistry. The microscopic study of tissue is termed as the histology. Histology is the study of tissues. Mitochondria performs the function of the cell in cellular respiration. Mitochondria एक organelle है जिसका function है cellular respiration में. Ornamental fruits and plants are studied of a horticulturist. The major organ of the digestive system include, तो all of the above are the organ of the digestive system. इसमें small intestine भी है, large intestine, stomach, oral cavity, pancreas and liver. The study of diagnosis and treatment of diseases of livestock done in the animal husbandry. The two major tissues that are present in the structure of stomach are, stomach में कौन से बुनियादी जो टिश्यू होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उसमें मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं और एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं. According to the Muslim, the human being was made from clay. मुसलमानों के मुताबिक इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया. Food crops and animals which are source of food are deal with the profession of agriculture. The level of biological organization considers all of the above. Individual level भी है, population level भी है, tissue level, cell level, molecular level and atomic level. So these are the biological organization level of the biological organizations. So all of the above is the correct option. Khalaqul Insan is the famous book of Abdul Malik Asmi. Bioelements usually do not exist in isolation. कभी बायोएलिमेंट आइसोलेशन की फॉर्म में नहीं होते. ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद बायोमोलिक्यूल बनाएंगे, उससे फिर ऑर्गेनेल्स बनेंगी, फिर सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. तो बायोएलिमेंट्स नेवर एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन फॉर्म. आइसोलेशन कहते हैं अलग की फॉर्म में कभी भी नहीं रहते. बट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. The Basica campestic is the scientific name of, पहले भी डिस्कस हो चुका है. तो Basica campestic is the scientific, campestis is the scientific name of the mustard plant. सरसों के पौधे का साइंसी नाम है. Organization of different organ and organ system forms an individual. The molecules having lower atomic weight are classified as the micromolecules. The study of drugs and their effects on an organism is called, तो जब ड्रग की बात करते हैं तो दैट स्टडी ऑफ द फार्माकोलॉजी. द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय साइंटिस्ट बोलिसिना इज, बोलिसिना की जो फेमस बुक है दैट वाज द कानून फिल तिब. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी. पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द टिश्यू व्हिच प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड, कौन से टिश्यू फूड तैयार करते हैं प्लांट्स में, पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा टिश्यू. Insects are the studied in the entomology. Entomology is the study of the insects. Epithelial, nervous, connective and muscular tissues are the major types of the animal tissues. The example of bioeconomic is, कौन सा bioeconomic की best example है, cost value of yield of crops, grinding of food and the movement of food to posterior end is done by muscular tissues. The tissues by which gastric juice is secreted for protein digestion are mainly the epithelial tissues, help in the synthesis and the secretion of the gastric juice. The example of the multicellular organizations are, कौन सी multicellular organization, mustard and the frog. The study of the chemistry of different processes and compounds in a living organism is classified as the biochemistry. Out of 16 bioelements, 10 makes the total mass percentage, which is equal to the 0.01%. The protoplasm of living thing is composed of water percentage 80 to 90%. The famous scientist Abdul Malik Asmi was born in 740 AD. The stable elements formed as a result of bonding between different elements is known as molecules. The domestic animals include sheep and cattle. The function of connective tissue is to provide support.
Vegetative parts of the mustard plants are vegetative plants कौन से ये सारे के सारे root stem branches and leaves all are the vegetative parts. An individual who live together in a population are known as तो उसको हम species कहेंगे जब एक ही किस्म की species एक एरिया में रहेंगी तो उसको हम population कहते हैं. The organ which is specialized for storing and digestion is the food storing and digestion of protein is the stomach. The tissue present between the xylem and phloem are known as lateral meristem. Relative performing organs are collectively known as organ system. According to Dr. Abdus Salam, scientific knowledge is the common heritage of the mankind. The kind of cellular organization in which cells are organized in the form of organs, tissues, and organ systems is called multicellular organization. The mustard plant is obtained at the end of the winter season, and the bioelements are combined instead of isolation through the ionic and the covalent bonding. Bioelements कभी isolation में नहीं रहते, इसमें या तो ionic bond होगा या तो covalent bond होगा. That's all about the MCQs of the exercise. और इसके अलावा हमने बहुत सारे MCQs डिस्कस किए, इससे आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो गई. Thank you so much. Keep watching Biology Learning Zone. In the next lecture we will discuss the long question, that is the bioelements.